Good afternoon, sir. Good afternoon, Arushi. How are you? I'm good, sir. How are you? All good here. All good. All good. Sir, shall we start or wait for a couple Yeah, definitely. No. We should start first. All right. We should not penalize someone who has come on time. Sure, sir. Sure. So, very good afternoon to everyone. I am Arushi Tibrewal from the marketing team at Trip Capital and your host for today. We welcome all of our YouTube and Zoom audience to another informative session on a very interesting and relevant topic, compass for navigating through volatile markets. This would be given by Mr. Amit Babari, founder and managing director, CR Forex Advisors. Thank you, sir, for joining us to share your insights on the topic. Before we move forward, I would like to give you all a brief introduction to Drip Capital. Drip Capital is a global trade finance company offering post-shipment collateral-free financing to MSME exporters in India. Drip works with over 6,000 buyers and sellers spread across over 100 countries. We have financed over US $3.5 billion worth of international trade since Drip's inception in 2016. If you're interested to know more about Drip Capital or want to receive a call back from us, kindly fill out the form shared in the chat section right now. A quick note for a Zoom audience. During the webinar, if you have any questions, please note them down. And towards the end of the sir's presentation, you can raise your hand and you can ask your questions directly to sir. For our YouTube audience, all of them can comment in the comment section and sir can answer them here. So without any further delay, let's dive into today's session. As the world is looming with decades-high inflation, the central banks are aggressively taking action to tame it through increasing interest rates. The Reserve Bank of India raised the benchmark lending rate by 50 basis points today to 5.90% in a bid to check inflation, which has remained above its tolerance level for the past 8 months. This follows the US Federal Reserve's recent third consecutive 0.75% percentage point interest rate increase. Currently, the policies of both the central banks are in line, but a divergence in the stance in the future could impact the financial markets heavily. With the US economy remaining robust, the strength in the US dollar index will have repercussions on the rupee the moment RBI loses its reins on the currency. Amid sharp currency moves and increased volatility, the business margins are getting affected. This can be fixed by adopting an appropriate hedging strategy, helping exporters like you reap fruitful results in the long term. All of this and more shall be covered by Mr. Prabhari in his presentation. Being a finance maniac and a Forex devotee for over 1.5 decades, Mr. Prabhari founded CR Forex to synergize his zeal for the Forex market. He holds the highest level of education in financial risk management, which is Financial Risk Manager, FRM, by the Global Association of Risk Professionals, and a master's in finance from ISFAI. He is well sought by various media houses like CNBC, Bloomberg, Money Control, Financial Express, and more for his opinions on Forex and the financial market. I would also take this opportunity to add that how fascinating was it to see his INR dollar predictions in our previous webinars to come true and to be precise. I'm eager to learn about his insights and recommendations to deal with the current volatility in the market. So thank you so much, sir, for coming for the session.
I now ask him to address our viewers. Over to you, sir. Thank you, Arushi. Thank you for your kind words. And probably, drip event has always been lucky. Last time March पे event किया था, so we expected a dollar rupee should move towards 78.5 kind of a level. Exactly the same had happened. And previously, we did an event in November saying that, okay, boss, whether dollar index at 100 is a reality. So वो भी हो गया. So now let us see. We hope and would touch. We pray to the Almighty that whatever we discuss today happens true. So before we start the presentation, let me make a simple promises for today. I will try to keep the presentation as simple as possible. We will have an interaction in between, and I will share my analysis, what I have learned in last 15 years, which will help you to manage the currency risks in a better manner. And any questions you have, you can write it down at the end of the presentation. Definitely, I'm going to answer all of them. So, in today's presentation, we are going to cover three things. What are outlook on global market and currencies, view on USD INR pair, and what kind of a hedging strategy an exporter or an importer should take in such a volatile times. So before we start, let us take a poll. Let me launch a poll. The first poll is, what is the biggest global concern today? Geopolitical tension, inflation, Fed tightening, crisis in China. Let me share the results of the poll. 65% of the people are saying that inflation is the biggest global concern today. We exactly match the view of the audience कि सबसे बड़ा जो concern है आज के दिन पे, that is inflation. My father used to say that in life and in business और कहीं पे भी आप जैसा बोओगे वैसा मिलेगा. So now let us see what we have पूरे सेंट्रल बैंक ने क्या किया और उसका रिजल्टेंट क्या आ गया. So we all know that in 2020 the entire market went into a recession kind of a scenario, not technical recession, but how problems say. And in order to come out with a problem, all the central bank across the world did one thing: print notes and given that money to the people. Fed, जो सबसे बड़ा central bank है world का, they have printed notes close to $4 trillion. मार्च में उनका जो बैलेंस शीट था वो करीब करीब 4 ट्रिलियन का था. At the end of March 2022, it was close to 8.96 trillion. So they have massively printed the note. Now, when you print the note at such a high volume, what happens? You get first I, which is inflation. आप पूरे मैप पे देखिए, everywhere minimum inflation is 5% and more. Countries like USA, UK, Europe, Japan, ये सब 2% इन्फ्लेशन के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे. Finally, in 2022, they have got inflation much higher than that. Now, the problem is not with the inflation. The problem is whether the inflation is transitory or not. Transitory means आएगा और चला जाएगा, आएगा और temporary रहेगा. But this inflation, according to us, is not transitory. हमने फेड के स्टेटमेंट आए सुने थे लास्ट 6 महीने पे कि many a times the Fed said that inflation is transitory, but in recent statement they said they've acknowledged the fact that inflation is not transitory. Now, when inflation is not transitory, what impact it is going to have on the financial market? Let us discuss that. In order to control the inflation, which is not transitory, central bank will take two kind of action. पहला, वो लोग इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे. फर्स्ट आई, इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे. सेकंड क्या करेंगे,
क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे, जो मार्केट पर लिक्विडिटी दिया था, दे विल ऑब्जर्व दैट काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी. नाउ व्हेन दे डू दैट, व्हाट विल हैपन? Before we move to that part, what will happen? Let me ask a simple question to the audience. Let us launch a poll. In last 40-50 years, मेरे को तो 50 साल नहीं हुए, what is the interest rate, highest interest rate in US economy? I think we have a very intelligent audience, very energetic. They're all giving votes. Good to see that. Let me end the poll. Let me share the results of the 57% of the audience says that highest interest rate in last 40 to 50 years is between 5 to 10%. 7% of the audience is saying that the interest rate in US in last 40-50 years is between 20 to 25%. Let me share an interesting data point with you. अगर आप ये चार्ट देखेंगे 1973 से लेके 2022 का फेड फंड जो पीक है वो दैट इज क्लोज टू 20%. आज से 40 साल पहले यूएस के अंदर पे इंटरेस्ट रेट जो था वो 20% था. एंड इमेजिन इन्फ्लेशन नंबर वाज क्लोज टू 15%. सो दे हैव, in order to curb the inflation, they went as high as 15%. So हमारे पास में रीजेंसी इफेक्ट है कि लास्ट 10 साल के अंदर पे हाँ यूएस के अंदर पे इंटरेस्ट रेट मोटा मोटी 5-7% होगा या 10% होगा, but the actual fact is it went more than 20%, and inflation in US at one point of time was close to 15%, जो हम emerging market में देखते थे. Now अब the idea of sharing that this chart is that currently we are at close to 3% in US in interest rate. तो interest rate in US कितने बढ़ेंगे आने वाले दिनों पे? To answer that question, let me share an example. ये पहले वाला चार्ट ये कहता है कि तब तक यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे जब तक people will not make real return नहीं आएंगे तब तक. Now let me give you an example. What is real interest rate? Suppose interest rate in the bank is 3% and महंगाई in the economy is 9%. Anyone who is investing in the bank is definitely losing 6%. Similarly, if the interest rate in economy is 6%, inflation 7% है, तो बंदा naturally 1% का नुकसान पे बैठा है. पॉजिटिव कब होगा? जब इंटरेस्ट रेट 7% है, इन्फ्लेशन 5% है, then we can say that okay boss, the investor is making 2% kind of a return. Now let us see what is the current scenario in USA. The current scenario in US is 3% का interest rate है, 8.6% का inflation है, and real interest rate is 5.6%. This is a very, very important data point. So the message is the Fed is going to increase the interest rate till that time जब तक in their economy real interest rate is positive. अभी तो कब तक बढ़ाएंगे? Fed is predicting that okay boss, in by December end I will increase the interest rate to 4.5%, and the target of inflation is 2%. अभी 8.6 का inflation है, they are targeting an inflation of 2%. So they have to 4.5 is a minimum number. Now if they increase the 4.5% तक पहुंचेंगे तो डॉलर इंडेक्स में क्या होगा वो देखते हैं. इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ फेब वाज क्लोज टू 9%, आज 8.6 है, तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया. आप देखिए डॉलर इंडेक्स जो है दैट आल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग. डॉलर इंडेक्स इन द मंथ ऑफ फरवरी वाज क्लोज टू 100, टुडे इट इज 112. इन्फ्लेशन फेब में कहां पे था? 9.1 पे. आज कहां पे? 8.6 पे.
उनका टारगेट क्या है? 2% इन्फ्लेशन पे लेके जाने का है। तो इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है, that is very very high, and interest rate of minimum from year 2.5% is going to increase in next 6 to 8 months more. If that happens, plus quantitative tightening of 95 billion hoga, so what impact it will have on dollar index? To answer this, let us see what has happened in the past. Similar kind of tapering they did in 2014. At that point of time, dollar index went as high as 26% was. अभी का रैली पे 12% है. Now it has gone as high as 26%. So the question is whether the dollar index rally will continue or not. By looking at the charts, we think that it reminds me of an old Hindi song which says that abhi to party shuru hui hai, and the party can last till the time the dollar index is reaching towards 121 kind of a level. After reaching to 121 kind of a level, I think again we will have one seminar and we can discuss that whether it will go back to 129 or not. But from 112 level currently, higher probability is that the dollar index is going to move towards 129 kind of a level. Now, a lot of people must be thinking, Amit is saying that Fed is going to increase the interest rate. Because of that, the dollar index is going to move higher. Interest rate to sab बढ़ा रहे हैं. Even RBI is increasing the interest rate. Then why European Central Bank भी interest rate बढ़ा रहे, UK भी interest rate बढ़ा रहे, then why dollar will outperform? To answer that question, let us look at numbers. If we see from the data, US economy is doing extremely well. Their manufacturing data is good. The retail sales data is good. The unemployment level is at lowest level in decades. The consumer confidence is at 59.5. More importantly, they have an ability to deal with the current inflation. Tightening कर सकते हैं. Political stability भी है. And the most important point is they have energy stability. When I say energy stability, हमको सबको पता है US खुद ही अपना ऑयल प्रोड्यूस करता है and they export. So they are not dependent on the world to give them oil. Europe में and UK में they are dependent on Russia, China, Russia and other countries to give them oil. So basically, we can say that US is the cleanest shirt in the dirty laundry. Because of this reason, चार reason है. Because of all of this reason, USD strength will prevail. Fed tightening करेगा. Whenever there is a global crisis, people will move from riskier asset to safe haven and they will prefer dollar. US economy is doing extremely well and their interdependence on energy and commodity is less. Because of all of this reason, a dollar index is going to move towards 121 kind of a level in coming months. Now, if dollar index move towards 121 kind of a level, what impact it will have on equity, gold, bond, and currency? Pen and paper, leke baithiega. I'm going to share some important levels to all my friends who are sitting here, and you write it down the levels. It is going to help you in making some money. So let me start with equity ka story. Now we all know 2020 post June, we had a fantastic rally in equity market across the world. Equity markets across the world were making newer highs. Now, if you see the data point from last 1 year, equity market across the globe is falling. And technically, Dow Jones का जो US का जो equity market है, they have entered into a bear market territory. वो कहते हैं कि अगर 20% से ज्यादा कोई भी equity market गिरती है in a year, then we can say that it has entered into a bear market territory. And when any indices enter into a bear market territory, the ideal strategy is sell on uptick. But if you compare, Indian equity market has outperformed global equity market.
but whether the trend will continue or not. We think that equity market across the globe will fall down. There are two main reasons for the same. Whenever we have seen that rally ke liye we need liquidity. If the liquidity is less, equity market do not perform. In the current scenario, जो pressure वाला situation है, Fed is going to increase the interest rate globally. People is going to all central bank are going to increase the interest rate. Liquidity tightening होने वाला है because of all of this liquidity tightening region, and corporates will have pressure or performance in this kind of an area. We feel that equity market will not do good, and money from safe haven, money from riskier asset will move to safe haven. And Nifty from current level of 17,000, it should ideally move towards 15,000 to 15,500 kind of a level. Now let us move to gold story. A lot of people has been asking me a question that generally whenever there is a crisis kind of a time, gold should perform well. Historically, whenever there is a crisis, gold has performed well. In 2020 also, gold has given a fantastic kind of a return. But this time, if you see, gold has not been able to perform. There are three main reasons for the same. पहला reason क्या है? As soon as the world, the war started between Russia and Ukraine, Russia had two things. एक था उनके पास में क्रूड, सेकंड जो था उनके पास में गोल्ड था. तो यूएस हैव स्ट्रेटेजिकली tried to keep oil and gold at a lower kind of a level ताकि Russia do not become much bigger. Second reason is that one of the biggest buyer of gold in the entire world is China. China is having its own problem. Because of that, they are not buying gold at current levels. And third, people say that gold is a non-yielding asset. Because all of these three reasons, mainly जब तक रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, till that time we are not expecting the gold price to move higher. And in coming days, the gold price will move towards 15,000, sorry, not 15,000, 1560 kind of a level. Currently, it is trading close to 1670 kind of a level. From there, it will move towards 1560 kind of a level in international market. And the second target is 1440 kind of a level. Now, let us move to a bond market story. Bond market is very, to try bond market, जो होता है, it's a leading indicator कि world में क्या होगा, crisis आएगा कि नहीं. So let us understand what is happening in the bond market. So they say that bond market has an inverse relationship between yield and the bond value. Basically, if the interest rate in the economy is increasing, then the bond yield will go up and then the bond value will come down. Let me give you an example. अगर सपोज करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,000 रुपए का बॉन्ड आज इशू किया, they are giving interest rate of 9%. After 1 month, they again came up with the same kind of a bond. 1,000 का bond है. Now they've increased the interest rate to from 9 to 9.5%. जो पहला वाला bond है मार्केट पे जो 1,000 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, definitely when the government will come up with a second bond of 9.5%, at that point of time, the first bond value will come down. Logically, why? Because no one will buy that bond if it is traded at 1,000. People will say, let me buy a second bond which is giving me 9.5%. So, summarized करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि bond value will come down when interest rate in the economy goes down. Now, let us see what is the bond market giving return. In last 10 years, 2004 से लेके 2022 तक 15-16 साल के अंदर पे, this year the bond market has given the negative interest rate of 17%. And if you see last 100 years, this is the first time the bond market is giving a negative return of 17%. Now, if it is giving a negative return of 17%, whether something is happening in the world market, this chart is going to show that.
मैंने आपको बताया बिगनिंग पे कि बॉन्ड मार्केट जो होता है वो कोई भी क्राइसिस का या अच्छे दिनों का इंडिकेशन देता है. सो द ग्रीन लाइन इज बॉन्ड मार्केट, ब्लू लाइन स्टॉक मार्केट का है, और थर्ड है कमोडिटी मार्केट का, ऑरेंज लाइन है. तो if the bond market started giving you positive return, it is a first indicator. Currently, we are in phase 5, where bond market has started to fall down. Probably यहाँ से यहाँ तक का सफर अभी बाकी है बॉन्ड मार्केट पे. Now, if this happens, then equity market will also underperform and commodities will also underperform. So the message here is equity market is going to underperform, commodity market is going to underperform, and bond market is going to underperform. Now, when the bond market is going to underperform, we have found that a lot of corporates are investing in bond market. At current juncture, when there is a higher chances that the interest rate across the globe will increase, people should avoid investing in bond market. Technically, I suggest them only to invest in liquid funds and overnight fund. वहां पे इंटरेस्ट बॉन्ड मार्क उतना प्राइस का रिस्क नहीं होता है. And definitely, as the interest rate in the economy is increasing, they can definitely invest in FD. Now, bond market story is finished. Now, people must be thinking, do not invest in equity, do not invest in gold, do not invest in bond. Then where do you put my money, boss? Ideal strategy at the current point of time is sit with cash. Liquidity is the king. Now let us move to the fourth part of the story. If dollar index goes higher, what will happen to all the currencies? Let me start with euro story first. Before we move to that, let us take a poll. I have launched the poll. Let me end the poll. Let me share the results of the poll. So 43% of the people are saying that energy cost in US has increased by 200%. 40% of the people are saying that energy cost in Europe has increased by 400%. And 18% of the people are saying that energy cost in Europe has increased by 700%. The correct answer is that energy cost in Europe, Eurozone, entire Eurozone, has increased by 700%. Now, before we move to Euro story, let us understand every country will have its own story for its own growth. For example, चाइना का सक्सेस का स्टोरी क्या है? चाइना का सक्सेस का स्टोरी है, चाइना हैज गॉट द ग्रोथ in terms of exporting. वो cheap labor and exporting to the other parts of the world was the reason of China's success story. इंडिया का सक्सेस स्टोरी का रीजन क्या है? इंडिया का सक्सेस होने स्टोरी का रीजन है कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी. एज वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज यंग, तो इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी ऑफ यूरोप. यूरोप का जो मॉडल है, यूरोप वाज for last 15 to 20 years, it has made a model that, okay boss, I am going to get commodity at a lower price, I'm going to manufacture the goods, I'm going to export to rest of the world. We all know that Germany is the largest exporter of cars, and we all like German cars. Now what has happened after this crisis?
after this crisis, the energy crisis, Russia Ukraine के war के कारण the energy crisis has increased. The cost of production has increased, and now they are not able to export. Germany, for the first time in last 20 years, their current account has become deficit. मतलब they are exporting lesser than their imports. पहली बार ऐसा हुआ. So now the crisis has given a birth to a new crisis in Europe. सबसे पहले energy crisis हुआ, because of that manufacturing crisis हुआ, because of that political crisis चल रहे हैं, and because of all of this reason, economic crisis they have entered. High inflation, low GDP, and a current account having deficit. So because of all of this reason, euro, if you see, is falling down drastically. In coming days, we find that the situation in Europe is not going to solve in next 2 to 3 months. The trend in the euro, entire Europe, is going to have a rippling effect. जो खराब situation है वो हमेशा रहेगा, and the euro is going to move towards current level of 0.98. So first target is close to 0.95 kind of a level, and then it can move towards 0.90 लेवल तक मूव करेगा. यूरो जोन का जो स्टोरी है, it reminds me of a story which my father used to always guide me when I started doing business. He said that business में एक चीज बहुत important है, वो होता है डाइवर्सिफिकेशन. यू हैव टू डाइवर्सिफाई इन द बिजनेस. आई थिंक प्रोबेबली यूरोजोन has learned that lesson in a hard way. They have relied for their imports. 30% of the import was used to come from Russia. Probably they have learned this lesson in a hard way. Now let us move to what is happening in pound. Before we move to pound, let me tell you, when हम जब डीलिंग रूम स्टार्ट करते थे, जब हमने अपना बैंक में जॉब करना स्टार्ट किया था, तब जो हमारे मेंटर्स थे वो कहते थे कि बस करेंसी का वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको दो चीज हमेशा देखनी चाहिए. एक, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री क्या है. व्हेन आई से फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, इट मींस दैट गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स है, टैक्स के लिए, बजट के लिए क्या स्टेप्स है, उसको फिस्कल पॉलिसी कहते थे. हम कहते थे कि फिस्कल पॉलिसी जो है चाइल्ड, करेंसी जो है उसका पापा है. मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, जो सेंट्रल बैंक लेते हैं, वो उसकी मदर है करेंसी के लिए. नाउ यूके के अंदर पे एक डाइवर्जेंस चल रहा है. रिसेंटली उनके इलेक्शन हुए, जो नए प्राइम मिनिस्टर मैडम आए, उन्होंने अनाउंस किया दे आर लूजनिंग फिस्कल पॉलिसी. दे सेड हम टैक्स को कट करेंगे. फिर उन्होंने कहा कि हम एनर्जी के बिल को कैप करेंगे. बेसिकली शी इज सेइंग दैट दे आर गोइंग फॉर अ लूजनिंग फिस्कल पॉलिसी. इन द अदर साइड, जो उनके सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी को बढ़ाएंगे. ना ये दोनों ऑपोजिट है. इसके वजह से आप देखिए इन लास्ट 10 days GBP USD has fallen drastically. Why? Because the child is confused. किसका सुने, पापा का सुने कि मम्मी का सुने? Because of that the child is confused and the currency is tumbling. Or if you see UK का data point, all the data points are negative. Highest inflation in G10, highest probability of recession in G10, biggest drop in standard of living since 1956, largest current account deficit, and government debt to GDP ratio is 100%. And we can say that the FX reserve is just 80 billion pound was. Because of all of this reason, GBP USD is a big sell. Current level of 1.12 say we are expecting it to move towards 1.03 kind of a level. That is first target. Second target is close to parity, or we can say just below parity, which is coming to 0.9940. GBP का story also reminds me one thing, that वक्त की बात है. Once upon a time, a global currency. Now no one wants to buy anything, just selling GBP USD. So basically we can say that GBP USD का भी trend is on the lower side. Now what kind of a strategy
any euro exporter or pound exporter should have. Preferably, they should do booking in 2 legs. यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी को आप बुक करें क्योंकि उनका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है. यूएसडी आईएनआर का जो लेग है, दे कैन कीप इट ओपन एट द एंड ऑफ द present. I think Sir lost his connection. He'll be back in just 2 minutes. Sir, your voice is cracking. Is it better now? Yeah, better. But sir, I can't see you. You can't see me? No. Let me give me a minute. Give me a minute. Yeah. Yes, sir. Sir, I think your network is still unstable. I don't know. Could you please check that? Is it better now? Yes, sir, better. काम चल जाएगा? Yes, sir, बिल्कुल. ठीक है. Sir, I suggest that maybe you can put your video off, and if you want to, share your screen for the presentation, the network might become. Yeah. Meanwhile, maybe you can do that. ठीक है, ऐसा करते हैं, हाँ. Yeah. So before important part of presentation, the internet got destabilized. I think inflation, interest rate, and internet. These are the 3 I's which are important for 2022 in coming days. Now let us go to the presentation and yeah. Sorry, sir, as you said. Am I not audible? No, sir, your internet is not stable. Can you try again? I mean, can you speak a little so that I can see if it's better? No, sir, it's not. Now, yeah. Now I think now I have fixed that. I think now you will be able to hear me better. Yes, sir, perfect. Please continue. Yeah. We were discussing about 2 I's, interest rate, inflation. I think the biggest I in the entire presentation is I for internet, boss. So before let us enter into the most important part of the presentation, and I will request all my audience to keep a piece of paper in their hand because I'm going to discuss key important levels. तो अब तक क्या summarize किया? Story covered till now.
Inflation is the biggest concern. Currently, we face internet is the biggest concern was. Fed will do tapering. Second, interest rate will go up across the globe. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? Dollar index is going to move higher towards 121 kind of a level. If that happens, what will happen? Please make a point. Nifty is going to fall from 17,000 current level to 15,000 to 15,500 kind of a level. Bond market is going to underperform. Gold is entered into a bear market territory, and gold will fall towards 14,040 kind of a level from the current level of 1670. Euro USD pair will move from 0.98 to 0.90 kind of a level. GBP USD will move from 1.11 towards parity. 1100 बिप का फॉल आ सकता है. So these are the key levels which all audience should note it down, and based on this key level, they should take action. Now, let us move to the, what is the outlook on dollar rupee pair. Before we move that, let me show you this beautiful chart. ये chart ऐसा कह रहा है कि last 3 महीने के अंदर पे dollar index has performed had given a return of close to 6.5%. All other currencies has weakened against dollar, and Indian rupee has outperformed against dollar. Indian rupee has only fallen by 3%. बाकी सब 11%, 7%, 6%, and dollar index itself has gone up by 6%. Now the question is that whether the dollar rally will continue or not, and whether Indian currency will outperform or not. Dollar rally is going to continue. Now we have to see whether Indian rupee will outperform or not. So before we move to that part of the presentation, let us take a simple poll. कि डॉलर रूपी क्या लगता है बॉस? In next 6 months, where do you expect dollar rupee to go? Let me end the poll. Let me share results of the poll. 47% of the audience is thinking that the dollar rupee pair will move above 83 kind of a level, and 49% of the audience is thinking that dollar rupee pair will be in a range of 80 to 83 levels. Now, let me share what is view of CR Forex research team. जैसा हमने अभी पोल लिया वैसा ही बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी पोल लिया था 29 जुलाई को, asking what will be the quarter, what will be the dollar rupee ka rate on 30th September. We said that on 30th September dollar rupee pair will close to 81.50 kind of a level. Luckily, we were very close to that poll. Now, lot of clients must be, there are a lot of clients who have attended our webinar earlier also. Abhi bhi aaye hain. They all know that we regularly write articles in CNBC TV 18. If anyone wants to read our articles on a regular basis, we come on a weekly kind. हर week में एक बार release करते हैं. They can Google Amit Pabari CNBC TV 18. There they can read our all previous articles also and coming days article also, which will give them a fair idea where the market is moving. In July, we wrote an article where we said that, okay, in coming days, dollar rupee pair will move towards 82 to 82 and a half kind of a level in coming days. Now let us see where dollar rupee pair will move now from current level. So before we move to that part, let us understand what are the factors we are going to track
to come to a conclusion where dollar rupee pair will move. So पहला point है dollar index का. We have discussed that we think that dollar index is going to move towards 121 kind of a level. If dollar index is moving towards 121 kind of a level, then all emerging market currencies will get weakened and dollar rupee pair will also have a negative impact on that. The second point is trade deficit. Now let me share a data with you. ये current account deficit का data है. Current account deficit is nothing but export of goods and services minus imports of goods and services. और trade deficit होता है export of goods minus imports of goods. अपना जो trade deficit का data है for the month of August was close to $29 billion. Last year at the same point of time, our trade deficit was close to $15 billion. And if you see current account deficit, वो 3 billion था negative से, this time it has increased to $18 billion. So our current account deficit is also increasing, our trade deficit is also increasing. This reminds me of Hindi movie का dialogue, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. So basically our receivables in dollars are less and our spending in dollars are more. Because of that, we are having current account deficit and trade deficit. Now, whether the story of higher current account deficit and trade deficit will continue in coming days, let us analyze few points. Before we move to that part of the presentation, let me ask a simple question to the audience. What kind of import we do from China? कितना हम import करते हैं चाइना से? ये लास्ट पोल है. We have last 5 seconds for the poll. Let me end the poll and share the results of the poll. So 80% of the audience think that we import more than 15% from China. 15% of the 15% ऐसा कहते हैं कि 10 से 15% के बीच में इंपोर्ट करते हैं और 6% कहते हैं कि हम less than 10% इंपोर्ट करते हैं. Basically, we import 15 to 16% from China. Highest import what we do is from China. Now, to answer to the question which I was discussing, that whether our current account deficit and trade deficit is going to continue or not. तो उसका आंसर है, if you see the graph, our import from China are increasing. Now let us understand why our import from China are increasing. एक तो पहला reason है ये consumption story in India is still intact. That is first reason. Second interesting point is something is happening to the currency. CNY INR was trading at 12.2 in the month of April. Now it is trading close to 11.30. Currently it is trading at 11.30. Now what has happened when this Chinese currency has fallen so much? Imports from China has become cheaper. Why Chinese currency has fallen? The logic is that USD CNY, it has depreciated at a faster pace than USD INR. Let me give you an example for the same. अगर हम चार्ट में देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो हुआ है स्ट्रॉन्ग 6% से हुआ है. चाइनीज यॉन जो वीक हुआ है डॉलर के सामने में वो 6.5% से हुआ है और डॉलर रुपी जो वीक हुआ है डॉलर के सामने पे वो 3.5% से हुआ है. बेसिकली our currency has outperformed. Because of that, our import from China is becoming cheaper and consumption story रहेगा. If these two combine, then our import का trade deficit
is going to increase in coming days, and our current account deficit is also going to increase. So at the end of the year, March तक हमारा जो data point कहता है, we will have a current account deficit of $120 billion, boss. That's a huge amount of deficit. If that deficit happens, then definitely it is going to have some kind of a pressure on dollar rupee pair. Now, current account deficit hai. Where the money will come from? The money can come from FII, FDI. If you see, FII has taken out money close to 22 billion in the current year. Only in the month of August, they have brought some money close to $7 billion. Usko chhod ke, they have been a net sellers. And liquidity globally is getting tightened. So we think that अगला 3 से 6 महीने पे FIIs will not pump in huge amount of money. So it will create more pressure on dollar rupee pair. Now it is very important to understand what is RBI stance. सोले मूवी का डायलॉग याद आता है, वो सांबा RBI ने कितने डॉलर बेचे. We can say that RBI reserves has come down by $111 billion. Now reserve do not only come down because of RBI selling dollars, it also come down because of various other reasons like gold का value down हो गया, currency के value down हो गए. But closely if you see that RBI had a forward book of $66 billion in the beginning of March, at the end of March 22 पे 66 billion का forward था. Now, what is the forward book? In 2020, we all know that lot of money was coming in India. Reliance से money लेके आए, Facebook से, Google से. At that point of time, RBI ने market में forward buy कर लिया. जैसे exporter sell करते हैं, RBI ने forward पे buy कर लिया. So the forward book was standing at $66 billion. Currently, at the end of March, at the end of September, it is at $22 billion. Basically, in last 6 months, they have sold close to $44 billion. ये जो forward book था 44 billion का, ये RBI का पक्का intervention हम बोल सकते हैं in the FX market. फिर आप देखेंगे futures में डेटा लिखा हुआ है -0.5 था, 8 बिलियन था. तो इससे भी हमको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फ्यूचर्स का मार्केट है, करेंसी फ्यूचर्स का, वहां पे भी आरबीआई ने क्लोज टू $7.5 बिलियन बेचा है. जो एफएक्स रिजर्व्स है वो 60 बिलियन से कम हुए हैं. वी कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट कि बॉस एफएक्स रिजर्व हैज कम डाउन बिकॉज आरबीआई हैज बीन सेलिंग डॉलर्स. देयर आर मेनी रीजंस फॉर द सेम, कि गोल्ड के वैल्यू डाउन हुए हैं या करेंसी के वैल्यू डाउन हुए, उसके कारण भी हो सकता है. लेकिन 44 + 7 विच इज $52 बिलियन आरबीआई ने सेल किया है, ये हम पक्का बोल सकते हैं. और 60 बिलियन से अप्रोक्सीमेटली वी कैन से अबाउट 30% जो होगा आरबीआई ने डॉलर सेल भी किया होगा. तो करीब करीब आरबीआई ने 70-75 बिलियन डॉलर को बेचा, और जो करेंसी वीक होने वाली थी उसकी जो स्पीड थी उसको कम किया. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज आरबीआई स्टैंड करंटली. आरबीआई का स्टैंड जो है वो अभी चेंज हो गया है. इसी पे मैंने दिस मंडे को आई हैव रिलीज्ड अ वीडियो इन यूट्यूब. If anyone wants to listen to our video views, they can subscribe CR Forex in YouTube. उसमें हम लोग रेगुलरली वीडियो शेयर करते हैं. In this week video, I said that RBI will not intervene heavily in the forex market now by selling dollars. Let us understand the reason for the same. नवंबर 2021 के अंदर पे मार्केट के अंदर पे लिक्विडिटी वाज क्लोज टू 8 लाख करोड़. टुडे लास्ट वीक बोल सकते हैं ऐसा कि लिक्विडिटी इन द मार्केट वाज क्लोज टू 21,000 करोड़ नेगेटिव. 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी था बैंकिंग सिस्टम के अंदर पे. अभी मार्केट के अंदर पे 21,000 करोड़ का लिक्विडिटी डेफिसिट है. बैंक के अंदर पैसा, ऐसा बोल सकते हैं, लिक्विडिटी नहीं है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड व्हेन आरबीआई सेल्स डॉलर, दे गेट रुपीस फ्रॉम द मार्केट. फॉर एग्जांपल, आप एक्सपोर्टर हैं, आप बैंक को डॉलर सेल करेंगे, बैंक आपको रुपया देगी, तो बेसिकली बैंक के पास में रुपया कम हो जाएगा. उसी तरह जब आरबीआई डॉलर सेल करता है तो बैंक आरबीआई को रुपया देती है, तो बेसिकली रुपीस इन द बैंकिंग सिस्टम गेट रिड्यूस. बिकॉज ऑफ दैट
reason we said that RBI अभी कम डॉलर को सेल करेगा. So if RBI is not selling dollars, to confirm this parameter, अभी 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया which came in paper also, business standard पे, कि फाइनेंस मिनिस्टर is not in favor of exhausting forex reserve to defend rupee. तो वो लोग आने वाले दिनों पे जो पेस में डॉलर को सेल कर रहे थे वो पेस में डॉलर का सेलिंग नहीं करेंगे. तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या होगा? यू विल सी अ वीकर रूपी. नाउ लेट अस कंक्लूड कि बॉस डॉलर इंडेक्स बुलिश लग रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ने वाला है, एफआई का कंटिन्यू सेलिंग होगा, आरबीआई का पेस जो होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. एक ही होप था कि अप्रिसिएशन को रोकने के लिए कि बाय चांस वी गेट इंक्लूजन इन द बॉन्ड इंडेक्स, बट दैट आल्सो Ministry of Finance has confirmed that it is going to happen next year. Because of all of these reasons, we think that dollar rupee pair is going to depreciate, or we can say that dollar rupee pair या रुपया जो है डॉलर के सामने में वीक होगा. बट द क्वेश्चन इज हाउ मच इट विल वीकन, कितना वीक होगा. So to answer that question, let us go back to history. We have एक डेटा पॉइंट निकाला कि जब जब डॉलर रुपये के अंदर पे बड़ा लेवल टूटता है, जैसे 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो डॉलर रुपये पेयर का मोमेंटम क्या होता है इन नेक्स्ट 1 मंथ. So if you see, when 40 level was broken, in next 1 month, the pair went to 42.43. Last time when it broke 70, it moved to 72.99 in 1 month. 2013 was an exception kind of a year where from 60 we moved immediately to 68.85 kind of a level in 1 month. So basically the average says that ideally dollar rupee pair should weaken by 4 rupees. एक exception ले सकते हैं 2013 का, where it has gone by 8.85 rupees. So basically the view is that in the short frame of time we expect that 80.50 to 81 will act as a very very strong support for the pair, and in coming days the pair will move towards 82 to 82 and a half kind of a level. That is a short term view. In the medium term we expect dollar rupee pair to move towards 83 and a half to 84 kind of a level. Now let us come to the final part of the presentation कि एक्सपोर्टर को हेजिंग कैसे करने का है. To answer this question, let me divide exporters into 2 buckets: thin margin exporters and thick margin exporters. Thin margin exporters like agri exporter, chemical exporters, cotton exporter, जिनके बिजनेस के मार्जिन जो होते हैं बहुत थिन होते हैं. When they take order, they take costing close to the spot, and their payment cycle is generally between 30 to 45 days. So currently in last 8-10 days हम जितने भी थिन मार्जिन एक्सपोर्टर से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि बॉस हमारा जो कॉस्टिंग है क्लोज टू 80 to 50 काइंड ऑफ अ लेवल है. तो फॉर देम वी आर सजेस्टिंग दैट they should cover 70 to 80% of their exposure only, and 20-30% जो exposure है वो ओपन रख सकते हैं फॉर अ हायर लेवल ऑफ 82 to 82 and a half लेवल. थिन मार्जिन जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके लिए बड़ा व्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनको तो रोज ऑर्डर लेना है, रोज कवर करना है. तो अगर आप थिन मार्जिन एक्सपोर्टर्स हैं तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द व्यू गोइंग ऑन, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कवर. बट ब्रॉडली आपको बैक टू बैक कवर करना है, 70 to 80% कवर कर सकते हैं, एंड 20% जो है आप ओपन रख सकते हैं अगर विद अ स्टॉप लॉस काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी. नाउ लेट अस मूव टू थिक मार्जिन एक्सपोर्टर्स. Thick margin exporters like textile exporter, pharma, engineering, IT, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, decent margin होता है. Costing के लिए if the current spot is 81 and a half, they might take costing close to 78, 70 and a half kind of a level. उनके पेमेंट साइकिल जो होते हैं 90 to 150 डेज होते हैं. उनको हम ऐसा कह रहे हैं कि जो बड़ा व्यू है डॉलर रुपये का वो 82 and a half का है और 83 की तरफ मूव करेगा.
So based on that view, they should hedge between 45 to 50%. For the remaining position, they can keep a stop loss of 80.80 and hold. थिक मार्जिन एक्सपोर्टर्स के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी किया लास्ट 6 महीने के अंदर पे, हमने उनका जो हेज रेशियो था वो हमेशा 45 to 50% के बीच में रखा, प्लस उनको बताया कि जैसे जैसे रुपया वीक होते जाएगा वैसे वैसे हम आपका स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएंगे. फॉर एग्जांपल, when dollar rupee pair was trading at 17.5 kind of a level, we said we'll keep a stop loss of 78 to 78.5. When dollar rupee pair went to 81, we said we will keep a stop loss of 80.80. When dollar rupee pair moved towards 82 level, we said currently you can keep a stop loss of 80.80. जैसे जैसे डॉलर रुपी पेयर आगे बढ़ता जाएगा, आपको आपका स्टॉप लॉस को बढ़ाना है और हेज रेशियो को 45-50% तक ही रखना है अगले 2 से 3 महीने तक. वंस ये ग्लोबल सिचुएशन थोड़े से काम डाउन होंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन इंक्रीज द हेज रेशियो. नाउ इफ यू आर इंपोर्टिंग, उनको क्या करना चाहिए? बेसिकली द मंत्रा फॉर इंपोर्टर्स फॉर द ईयर ऑफ डिप्स यू गेट टुवर्ड्स 81 to 81.20 kind of a level, then you should just simply go and buy your imports. अभी कहाँ तक import cover करना है? That to answer that, it depends on two things. What kind of costing you have? Costing तो अभी सबका lower ही होगा, but फिर भी import तो करना पड़ेगा because the overall trend of the pair is on the weaker side. Someone who do not want to hedge, thinking that okay, but currency will appreciate towards 78 or 79 or 80 kind of a level, then instead of forward, they can use option strategy. That okay, boss, if the currency comes down, they get some kind of an advantage. But hedging of import is must. Before we end today's presentation, let me give you key takeaways. लास्ट 15 साल के करियर के अंदर पे one thing I have understood, that whenever there is a global crisis, our rupee will weaken. Second important parameter, if you are thin margin exporter, boss, then please simply avoid over hedging in such kind of a scenario. If you are a thick margin exporters and bank comes and tell you 82 का level है, ₹2.5 का प्रीमियम है, 85.5 मिल रहा है, अच्छा लेवल है, अच्छा जो लेवल है, that is a relative term. At 77, 79 was अच्छा level. At 80, 82 was अच्छा level. Now currently 82, 84 looks अच्छा level. But I think this year of 2022, you should avoid doing that. Third important mistake is that a lot of people do long-term forwards. 77 पे लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड रहने दिए, 78 पे लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड रहने दिए, सब कुछ स्पॉट पे लगे. इफ यू हैव लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड एंड इफ योर हेज रेशियो is beyond 50%, you have to see the hedge ratio also. If your hedge ratio is beyond 50%, then ideally you should use them. And for thick margin exporter, the better strategy is wait with a stop loss, because the outlook for the pair is on the weaker side. So if anyone wait with a stop loss kind of strategy follow karenge to better yield milega. And for euro and pound, as the overall view of euro and pound remains on the weaker side, if the pair is trading below your costing level and you are hoping that the currency will bounce back, and at that point of time I should hedge, I will suggest that if the stop loss is triggered, basically it has moved below your costing level, you should immediately hedge, because the outlook of euro and pound is on the weaker side. उसका main reason क्या है कि वहां पे उनके कंट्री के अंदर में दे आर हैविंग करंट अकाउंट डेफिसिट. तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट होगा और इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं होगी, वो कंट्री का करेंसी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है. With this, I will end my today's presentation. Over to Drip team, and then we can ask. I will be able to answer all the questions. Thank you so much, sir. I would say that this was really insightful, not just for exporters, but non-exporters as well, like me. But I'm sure everybody must have questions, but you have covered a lot of things. So I request all of our audience that please raise your hands or
just write down your question in the chat box or in the chat section and we can take that up. And for our YouTube audience to please put down their questions in the comment section. Please raise your hands if you have any questions. Yes, we have Miss Shobhana. I'm allowing her to talk. Ma'am, please unmute yourself. Miss Shobhana Sawant, please unmute yourself. Yes. Hello. Yes, you're audible. Yes, ma'am. सर बहुत ही एक्सलेंट इंफॉर्मेशन था. रियली वी आर वेरी 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 मीन्स नो वर्ड्स. ओके सर, माय वन क्वेश्चन. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था. आज आपने देखा कि डॉलर ने एकदम मतलब 25-30 पैसे का डाउन टर्न किया. जैसे कि वो न्यूज आया कि आरबीआई ने जो स्टेट रिफाइनरीज है उनको क्रेडिट लाइन किया 92 बिलियन का. तो सडनली वो नीचे आया, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ. सडनली आप देखेंगे वो 14 तक नीचे आया था, 81.14 और 42 तक गया. तो क्या इतना मतलब प्रेशर आ रहा है क्या, बाइंग प्रेशर, कि आरबीआई का इतना टूल्स अदर देन उन्होंने इतना टूल्स यूज किया तो भी हम लोग रुपी को डेप्रिशिएट करने से नहीं बचे? मैम, आपका क्वेश्चन बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है. अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इवेंट में आने के पहले वॉलेटिलिटी मार्केट को भी देखा. आपको ये जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है, मैं आपको उसका ब्रीफ पहले देता हूँ कि आरबीआई ने क्या बोला. जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो मार्केट में बाई ना करके आरबीआई के पास से बाई कर सकती है. ठीक है. अभी आप जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का हम बात करेंगे, वो लोग करीब करीब हर दिन का $500 बिलियन का उनका इंपोर्ट का पेमेंट उनको बाई करने का होता है. तो वो मार्केट से बाई नहीं करेंगे, लेकिन आरबीआई से तो बाई करेंगे ही ना करेंगे. नेचुरल डिमांड तो है ही. हम ऑयल इंपोर्ट करना तो बंद नहीं करेंगे. तो बेसिकली द आंसर इज दे विल नॉट कम बैक टू द मार्केट, बट दे आर बाइंग फ्रॉम आरबीआई. तो डिमांड कम नहीं हुआ है, ना ही डिमांड कम हुआ है, ना ही ट्रेड डेफिसिट कम होने वाला है. खाली विंडो को चेंज कर दिया है. न्यूज आया तो मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिला. फिर मार्केट ने रियलाइज किया कि बॉस मेरे से बाई करे या किसी और से बाई करे, पर कहीं ना कहीं तो बाई तो करेगा डॉलर को. तो उसकी वजह से वो 80.15 से 80.42 में वापस चला गया. न्यूज के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया कि हाँ बॉस, आरबीआई ने कोई स्टेप लिया है. पर बाद में पता चला कि नहीं यार, ये तो बैंक से बाई नहीं करेंगे तो आरबीआई से बाई करेंगे. टेक्निकली डिमांड तो रहने वाला ही है. तो ओवरऑल हमने जो प्रेजेंटेशन देखा उसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, अभी एक ग्लोबल लिक्विडिटी का टाइटनिंग होने वाला है, डॉलर का शॉर्टेज होने वाला है, और अपना जो इंपोर्ट है, अपना जो ट्रेड डेफिसिट है, वो कम नहीं हो रहा है. बिकॉज ऑफ ये सब के रीजन वी थिंक दैट डॉलर रुपी पेयर इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स 82 to 82.5 काइंड ऑफ लेवल. ओके सर, तो कंटिन्यूइंग दिस कि ओके आपने बराबर बोला कि अपना मार्केट फंडामेंटली और सेंटिमेंट दोनों पे चलता है. ओके जैसे कि आपने अभी बोला न्यूज ए हो गया, तो वैसे हम लोग को वी आर मतलब इम्पोर्टर ऑल्सो एक्सपोर्टर ऑल्सो. ओके, तो इम्पोर्ट मेरा जो है, तो फिर मैं ऐसे न्यूज के लिए या आरबीआई ऐसा कोई टूल्स करे तो एज मार्केट रन ऑन सेंटिमेंट्स, तो इसके लिए मेरा कुछ चांसेस है कि बिलो 81 में जाके वेट करूं फॉर इम्पोर्ट साइड? 80 का जो सपोर्ट है ना, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द पेयर. अभी आपका इंपोर्ट का पेमेंट कब का है? एक्चुअली मतलब हम लोगों ने नवंबर एंड तक तो फुल्ली हेज किए है. ऑलमोस्ट रेट है 79.50 पे मैंने हेज किया था, क्योंकि ये पूरा मतलब ट्रेंड पता ही था. और स्पेशली थैंक्स टू आपको टीम को कि आपका वीडियो मैंने देखा था सर, जो आपने बोला था कि ये 82 रियली मीन्स ऑनेस्टली आई एम टेलिंग कि वो वीडियो मैंने सुना था, और ट्रेंड और जो भी फैक्टर्स थे जो इंटरनेशनली डॉलर को अप्रिशिएट करके रुपी को डेप्रिशिएट कर रहे थे. और बेसिकली दूसरा थोड़ा स्टडी भी था मेरा, जैसे कुछ फैक्टर्स थे कि जब भी चाइना का डॉलर, चाइना जब भी अप्रिशिएट होता है तो दूसरे करेंसी अप्रिशिएट होते हैं. चाइना का यॉन डेप्रिशिएट होता है तो दूसरे करेंसी भी होते हैं. 2 दिन पहले चाइना ने किया था यॉन को, लेकिन आरबीआई का भी सीतारामन का जो कमेंट था कि वो लोग नहीं इंटरफेयर करेंगे, तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ. तो वैसे सब दूसरा भी स्टडी था, तो वो सब सोच के मैंने 79.50
तक नवंबर एंड तक का पूरा कवर किया था. So we are now making payments at the rate of 79.50 all import payments. फैंटास्टिक बॉस, मजा आ गया आपका ये स्टोरी सुन के, मजा आया. आपने हमारा यूट्यूब वीडियो सुना और आपने जाके डॉलर को बाई किया. आज आपका जो भी इंपोर्ट का पेमेंट है सब 79.5 पे कवर हो रहा है. फैंटास्टिक. नाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन के बॉस, दिसंबर का इंपोर्ट का पेमेंट है, कैन आई गेट 81 का बिलो लेवल? प्रोबेबिलिटी कम है, बट यू कैन वेट फॉर 2-3 days. If it is not coming below 81.20, 81.10, then I think ideally we should go and just cover import for December also. Okay, thank you very much, sir. आप कौन से कंपनी से हैं मैडम? Neogen Chemicals Limited. Right. Thank you, sir. Thank you. Namaskar, madam. Thank you, sir, for sharing that. We have another question where I'll just recite the question. Yes, so it's by Jay Singh. He's saying that he's asking what strategy we should follow as an exporter till March 2023. वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं मैम? वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, इंजीनियरिंग है, क्या उनको आप पूछ सकते हैं? Yes, sure. Mr. Jaishin, can you please either unmute yourself or type it down? I'm allowing you to talk. If you could just answer that. Or you could type it in the chat section. We are a chemical exporter. I hope आप अगर chemical exporter है, आप अगर you will fall under thin margin exporters. Generally जो chemical exporter हमारे client है, they have अगर आज 81.5 चल रहा है, so they take costing close to 81 and then they sell goods. If you are falling under that category, if you are a trader of a chemical exporter, then ideally you should cover 60 to 70% of your exports based on your costing. For remaining position, you can keep a stop loss of 80.80 and wait for a target of 82 to 82.5 kind of a level. अगर आप थिन मार्जिन एक्सपोर्टर्स है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको डायनामिक हेजिंग करना पड़ता है because you take costing very close to the spot and your margins are also thin. In that case, either you can connect to my team or you can listen to my YouTube channel. वहां पे आपको इंसाइट मिलेगा क्योंकि हम लोग हर वीक उसका जो स्ट्रेटेजी होता है वो गाइड करते हैं. मार्च तक का बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपका जो बिजनेस साइकिल है, अगर आप ट्रेडर हो तो उस पे आप लंबा कॉल लेके नहीं कर सकते हैं. एंड एज आई मेंशन इन द पीपीटी that if you are falling under thin margin exporter, then you should not book long term forward contract saying that okay boss अभी आज 82 है, 85 का रेट मिल रहा है, let me cover. क्या पता मार्च में 85 हो, 86 हो और आपका जो फॉरवर्ड है वो 83 का है, then at that point of time you will lose money on your business. So avoid that kind of a thing. So I think thank you so much for that insight, but there is one more question related to this by Mr. Deepak Goyal. He's asking, should we book forward for the long term or for the short term? दीपक जी, आप कौन से कैटेगरी के एक्सपोर्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप थिन मार्जिन एक्सपोर्टर्स हैं तो आपको जनरली हम लोग बैक टू बैक कवर करने के लिए कहते हैं वी आर थिन मार्जिन एक्सपोर्टर. आप केमिकल एक्सपोर्टर है, एग्री एक्सपोर्टर है, क्या है सर? So if you could type in. We are केमिकल. हाँ सर, थिन मार्जिन के लिए हमारा फॉर्मूला एक ही है. आपका जो ऑर्डर आता है, आपका जो पेमेंट का टर्म्स है, उसके आगे पीछे का आपको डेट चूज करने के हैं. उनको हम लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड बुकिंग नहीं कराते. एनीवन हु इज टू हैविंग थिन मार्जिन बिजनेस, उनको हम लोग यही सजेस्ट करते हैं. आपका अगर सपोज आज ऑर्डर लिया है आपने, 2 महीने बाद का पेमेंट आने वाला है, आपको 2 महीने के आसपास के डेट का फॉरवर्ड बुक करना चाहिए. Thank you, sir. Quickly taking up another question. I'll allow Mr. Divakar to ask his question.
Hello, Yes, sir. ma'am, am I audible? Yes, sir, you are. Amit, just a few minutes back, you just answered that gentleman, Jayashri, that for March, if 85 is there, ideally we should book forwards. Suppose that trend got reversed, dollar may trend to 81. Suppose today it's trending on 81.40 and we are getting some 1.5 rupees for March. You are suggesting whether we should go for booking or we keep on waiting. नहीं, इस पे सर डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी के बिजनेस में हो. We are आप textile अगर- exporters. आप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स है, तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर मतलब आपका मार्जिन जो होगा थोड़ा डिसेंट होगा, थिक मार्जिन होगा, वेफर थिन नहीं होगा, 2-3% का बिजनेस का मार्जिन नहीं होगा. ठीक है, आपका बड़ा साइकिल भी होगा. Everybody who is doing business in textile, that is a thin margin exporter. Government shrunk the I- profits and all that you know very well because you are Yeah, dealing with textile and all that you know. right. So, yeah, because of a lot of other reasons, the margins in the textile industry is also started shrinking, and some textile exporters also have negative margins also. आप जनवरी का बुक करें कि नहीं, वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज इफ यू आर अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, अगर आपने ऑर्डर लेके रखा है, सपोज करिए आपका कॉस्टिंग है 80 का, आज रुपी चल रहा है 81.50 के आसपास में, तो व्हाट वी आर सजेस्टिंग 45-50% जो है आप कवर कर सकते हैं. रेस्ट के लिए यू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 80.80 एंड वेट. Why? Because we are expecting a target of 82 kind of a level. That is Hedge an ratio ideal जो है, situation. That is an ideal situation that you always prefer since from past 1 year. I followed you daily continuously. Every Monday I listen all your YouTube channels and all. Every Monday I follow. But now that is not making sense to me. Suppose that trend, ultimately I told you that if that trend reverses to 80 levels, then you are saying that margin is there, your costing is that. No, we want to increase our margins through forward bookings. now उसमें डिपेंड करता है कि आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है. सपोज करिए आपका ऑर्डर कंफर्म है, आपको लगता है कि मेरे को रिस्क नहीं लेने का है, तो ओके, यू कैन गो एंड कवर 70%, 80% एंड यू कैन कवर 100% ऑल्सो. बट द आइडिया इज, जो मैं आपको मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, कि अभी डॉलर रुपए का जो व्यू है, जो आप सुन भी रहे होंगे, मैं कह भी रहा हूं लास्ट 1 साल से, कि डॉलर रुपए का जो व्यू है वो ऑन अ वीकर साइड है. अब जब वो वीकर साइड पे है, तब क्वेश्चन ये आता है कि वेदर इट विल गेट वीकर मोर देन द प्रीमियम और नॉट. Fortunately, in last 6 months, it has got weakened more than the premium. So now, if it is weakened more than the premium, then ideally, holding with a stop loss kind of a strategy will help. Now, stop loss, technically, आज के लिए हमको लगता है कि बॉस, we can say the rally has ended if the pair goes below 2 level, which is 80.80 first level, second level is 80.20. If the pair moves below this 2 level, we can say that, okay, boss, we have to really consider our view, whether it will go towards 83 or 84 or not. So till that time, the pair is trading above this 2 critical level. Till that time, dollar index is trading above 110 level. हम लोग कह सकते हैं कि the बड़ा view, the bigger view is dollar index is going to move higher and dollar rupee pair is going to get weaker. Based on that, you can judge, you can take a call. But my only request to all textile exporter or any exporter is that do not overhedge. ऐसा आप मत सोचो आपके पास में ऑर्डर नहीं है and you go and hedge your business. ऐसा मत करो. That is the only request. Thank you, Amit. Thank you. There is another question from a textile exporter. I'll just read out the question to you. For the last 3 months, participating in forward sale contracts, exports, almost 50% FC covered. If rupee continuously depreciates, what will be our stand? Could we go spot booking only? Very, very interesting point. सर, आपको 2 चीज का ख्याल रखना है. एक, आपको ये देखना है कि आपका हेज रेशियो क्या है. आप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, आपका हेज रेशियो क्या है. आइडियली करंटली आपका जो भी ऑर्डर है उसका 45 to 50%
रख सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सपोज करो I was talking with one of the textile exporter in Tirupur, and today some article also came in one of the leading business paper that Tirupur exporters are expecting that their volume will come down by 25%. Now suppose if you have booked a forward anticipation पे कि भाई हमारा टर्नओवर 100 crore होगा, let me go and book for 50 crores, but today you don't have an order of 50 crores, currently you have order of 30 crores. तो current scenario के अंदर पे it is very very important that you should not overcover yourself, because the story is that the currency will move towards 82.5 83 लेवल तक जाएगा. अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि हाउ डू यू मैनेज योर फॉरवर्ड एंड स्पॉट. वो आपको डे टू डे बेसिस पे एक कॉल लेना पड़ेगा. आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं फॉरवर्ड कितना यूज करूं, मैं स्पॉट कितना यूज करूं. इन मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम यू हैव टू यूज, बिकॉज द चांसेस आर दैट द करेंसी विल वीकर फर्दर. तो आपको एक एवरेज बना के चलना पड़ेगा इसके लिए. Thank you for answering that question, sir. Now I'll ask Ms. Khushbu to ask her question directly to sir. Yeah, hello, sir. Good evening. So the thing is, I wanted to ask, as somebody who is planning on starting up a textile import thing, so should we start it right away, or we should wait it out for a couple of months to see if the market stabilizes, given other costs? आप जो इंपोर्ट करना चाहते हैं टेक्सटाइल में, एसेसरीज इंपोर्ट करना चाहते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, और ये मशीनरी आप इंपोर्ट का जो पेमेंट करेंगे वो कितने टाइम में करेंगे? About 90 days. ओके. अभी इसमें आपको एक कैलकुलेशन खुद को इंटरनली करना पड़ेगा. सपोज करिए आपने एक मशीन इंपोर्ट किया आज, एग्जांपल, और आपने इमीडिएटली आपका पेमेंट को हेज कर दिया 90 डेज के लिए. तो आज डॉलर रुपी रेट चल रहा है क्लोज टू 81.50, एग्जांपल. आपने 90 डेज का जाके हेजिंग कर लिया. द प्रीमियम एनुअलाइज्ड प्रीमियम कॉस्ट इज 2.5%. सो उतना जो आप पैसा पे कर रहे हैं इंपोर्ट के मशीनरी के लिए, जो हेजिंग कॉस्ट है, वो आपका कॉस्ट हो गया. अब जब आप इंपोर्ट मशीनरी कर रहे हैं, उससे जो आप प्रोड्यूस करेंगे, उससे आपको क्या आरओआई आएगा? आपको ऐसा लगता है इंटरनली कि हम अगर इंपोर्ट करेंगे मशीनरी और हम जो प्रोड्यूस करेंगे, जो उसको सेल करेंगे, उसमें हमको महीने का 5% बनेगा, तो हेजिंग कॉस्ट तो नेग्लिजिबल है. मशीनरी ही ट्रेड करनी है. मशीनरी इज द प्रोडक्ट. अच्छा, मशीनरी यू विल इंपोर्ट एंड मशीनरी यू विल सेल. Yes. Probably you have to judge the demand. What kind of a outlook I am getting from lot of textile exporter is that their sales are on a lower side. Now whether they will invest in the machinery or not, that is a question. But the important point here is that if you are importing a machinery, then basically you have to hedge your imports. Correct. You have to have a hedging policy and you have to definitely hedge your imports. ऐसा सोचेंगे कि hedging नहीं करेंगे तो फाइट हो सकता है. This will be on a higher side, about 90-95% at the very least. 90-95% क्या बोल रहे हैं आप? Hedging at the very least. देखिए, अभी तो प्रीमियम बहुत कम हो गए हैं. पहले जो प्रीमियम 6% 7% होते थे एनुअली, अभी तो प्रीमियम बहुत ही कम हो गए हैं. आइडली जो अभी का करंट ट्रेंड है, आपको 70-80% तो हेज इमीडिएटली कर लेना चाहिए, जैसे आपको कंफर्मेशन मिलता है. बाकी का 20-30% आप मार्केट पे एक स्टॉप लॉस लेवल रख के डिसाइड कर सकते हैं. Right. So given the textile scenario, मतलब बिजनेस अभी तक स्टार्ट किया नहीं है, तो अभी करें कि we should wait for about 3 to 6 months, देखें कि कैसा सिनेरियो है और फिर इंपोर्ट स्टार्ट करें, फिर बिजनेस स्टार्ट करें. मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जॉब करता था, तो आई आस्क्ड द सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन टू माय फादर. तो माय फादर यूज्ड टू टेल मी दैट बिजनेस स्टार्ट करने का कोई अच्छा टाइम नहीं होता है. बिजनेस को स्टार्ट जितना जल्दी हो उतना कर देना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस तो आने वाले ही हैं. कभी ये चैलेंज आएंगे, कभी वो चैलेंज आएंगे, कभी करेंसी का चैलेंज आएगा, कभी मैन पावर का चैलेंज आएगा, कभी गवर्नमेंट का चैलेंज आएगा. तो जितना देर करोगे
तो बिजनेस करने का जो मोटिवेशन है वो कोई ना कोई रीजन से खत्म हो जाएगा। तो मेरे पिताजी तो हमको ऐसा कहते थे कि कल कर रहे हो बिजनेस तो आज करो, आज कर रहे हो तो अभी करो। तो मेरे को आपका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, पर मेरे को ये पता है कि बॉस बिजनेस में चैलेंजेस तो आने वाले हैं, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए बॉस। और आपको जो करेंसी में आपको हेल्प चाहिए तो मेरी टीम है, आपको उसमें गाइड करेगी, हेल्प करने में, हेजिंग करने में। Okay, Anand ji, thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Sir, Mr. JV, I think I would unmute him. He had a question. Sir, you can unmute Mr. JV if you want. Yeah. Sir, you're not audible. हाँ जी सर। So you're mute. I think there's some issue with his audio. सर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, अगर कुछ इशू आ रहा है तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। Yes. Till that time, we can move on to another question. It's by Amrita. Ma'am, she's asking that if dollar index is expected to rally to 121, where do you think rupee will move in the start of the 2023? अभी it is trading close to 81.5. I think 83.5, 84 तक chances है कि dollar rupee March end it will close at 83.5, 84 kind of a level. All right, so thank you. Then there's Kavin Shah. I think I'll take her question. She's asking, I will surely import saffron in November 22. When new crop comes, how can I hedge my import obligation if rupee will depreciate more? Please guide. There are two ways you can, if you are a regular importer, you can ask your bank to hedge on anticipation, because your order is not yet confirmed. On an anticipation basis, you can hedge your imports with bank. First option. Second option is you can go and hedge in currency futures. NSE या BSE में जाके आप hedge कर सकते हैं, और वहां पे हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, that you can do. Thank you, sir. I think we have one more question. Mr. JV has typed his question. What is your advice on rupee PCFC at present rates? In rupee, PC interest equalization benefit of 2 by 3% is adjusted. हाँ सर, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, आपको ईपीसी लेना है या आपको पीसीएफसी लेना है, उसका डिपेंड करता है कंपैरिजन आपके लिए क्या कंपेयर करना है आपको। सबसे पहले अगर आप ईपीसी लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है। सपोज यू से बॉस माय इंटरेस्ट कॉस्ट इन ईपीसी 7.5%. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सबवेंशन, you getting subvention or not? The subvention is 3%. So basically your net cost comes down to 4.5%. And if you book a forward, you get a premium close to 3%. So basically your cost in EPC becomes at current juncture 1.5%. Now if you compare with PCFC, foreign currency loan लेते हैं, तो PCFC currently you will get SOFR plus 2 basis point पे. So basically the cost will come to more than 1.5%. So as the cost is coming higher than EPC, PCFC का cost higher है EPC से because of subvention and forward premium, it is better that you take EPC. So this kind of evaluation you have to do on your own कि क्या मेरे को subvention मिलता है कि नहीं, क्या मैं forward book करता हूँ कि नहीं, और forward premium लेता हूँ कि नहीं, and then what is the cost you are getting in PCFC with your bank, that you have to check, and then based on that you can take a call. I think he has some audio issues. Thank you for answering his question, sir. I think I'll give Ms. Shobana another chance to talk. She has a question. Yeah. Yes, ma'am. हेलो सर। Yes, madam. हाँ, मेरा एक
ऑब्जर्वेशन है कि अभी फेड अनाउंस कर रहा है कि दे आर वेरी हॉकिश इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट. Okay, so next Fed meeting is on I think 2nd November and next one is 15 December. Correct? And करेक्ट मैडम. ओके, एक पॉइंट है कि उसमें अगर वो अभी हॉकिस है और उन्होंने दोनों मीटिंग में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और उनका सपोज जो टारगेटेड रेट है इंटरेस्ट रेट जो 4.525%, तो वो अगर उनका अचीव होता है, ओके, तो बाद में फिर वो अभी जो बढ़ रहा है डॉलर रुपी, तो एक फैक्टर है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है एग्रेसिवली, उससे बढ़ रहा है. तो वो अगर उधर वो कूल डाउन हो गए कि उनको लगा चलो कि ठीक है मेरा अभी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया है, जो मेन फैक्टर कंसर्न फैक्टर इज इन्फ्लेशन, तो अगर उनको लगता है इन्फ्लेशन भी मेरा कंट्रोल में आ गया है, तो उधर तो रुक गया अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करने का. तो आपको क्या लगता है कि दिसंबर के बाद मतलब जनवरी के बाद जो आप बोल रहे हो टारगेट दे रहे हो, तो अदर देन क्या फैक्टर हो सकते हैं कि वो टाइम पे वो 84 को जाएगा? मैम उसमें हमको ये समझना पड़ेगा, जो मैं पीपीटी में भी क्वेश्चन डाला था कि क्या इस टाइम का जो इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी है कि नहीं. मतलब इन्फ्लेशन आया और चला जाएगा, ऐसा इन्फ्लेशन है इस टाइम का. मैं कह रहा हूं कि ये जो इन्फ्लेशन इस डेकेड पे है 2022 पे जो आया है, वो इतना इजीली 1-2% का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल पे नहीं आएगा. आप देखिए, इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ फेब वाज क्लोज टू 9.1%. आज 9.1% का इन्फ्लेशन है 8.6%. फेड ने कितना रेट हाइक किया? क्लोज टू 3%. 3% इंटरेस्ट रेट हाइक किया तो भी जो इन्फ्लेशन है 0.5% से ही कम हुआ है. अभी उनको तो इन्फ्लेशन बहुत 2% तक लेके जाने का है. तो ऐसा नहीं होने वाला है कि ये इन्फ्लेशन रातों रात चला जाएगा. दिस इज अ सिचुएशन व्हिच हैज हैपेंड इन 1980s. सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो सुना होगा 6 महीने पहले वाला, तब मैं कहता था बिफोर द फेड स्टार्टेड सेइंग दैट इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, आई यूज्ड टू से दैट इन्फ्लेशन दिस टाइम इज नॉट ट्रांजिटरी. एंड आफ्टर दैट दे हैव एक्नॉलेज कि बस इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है. इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिमेन फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months. इतना आसानी से इस बार का जो इन्फ्लेशन है वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है. इसी की वजह से डॉलर इंडेक्स ऑन अ बिगर ट्रेंड इज गोइंग टू लास्ट बॉस. इतना आसानी से ये इन्फ्लेशन नहीं जाने वाला है मैडम. 8.5% का इन्फ्लेशन है यूएस में, वो 1-2% के रेट हाइक करने से नहीं होने वाला है. बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ कंबाइंड होंगे, तब जाके 6 महीने के बाद में कुछ राहत मिलेगा. तब तक तो इन्फ्लेशन भी ऊपर, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर. ओके, Thank you, sir. I think we can take just like last question for today's session. It's by Vijay Agarwal. He's saying that he's an importer with exposure of about 20 to 25 million every time, and payment terms are from 180 to 360 days after receipt of goods. So far, he's keeping position open. How to mitigate volatility risk? क्या इंपोर्ट करते हैं विजय जी? ऑयल केमिकल क्या इंपोर्ट करते हैं? If sir, you can type it in the chat box, or I have given you chance to unmute, Mr. Vijay Agarwal. Ships. अच्छा, शिप्स. Yeah. विजय जी, जो शिप इंपोर्ट करने वाले हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं ऐसा कहता हूं कि हर 2-3 साल के अंदर पे एक टाइम आता है जहां पे हेजिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. 2008 एक ऐसा साल था, 2013 एक ऐसा साल था, 2018 एक ऐसा साल था, और प्रोबब्ली 2022 इज ऑल्सो अ ईयर वेयर इंपोर्ट हैज टू बी कवर्ड. ठीक है. अभी आप बोलेंगे, या सॉरी, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. तो बेसिकली द आइडिया इज कि आपको इंपोर्ट्स को कवर करना है. नाउ
अगर मैं आपको आज से 6 महीने का इंपोर्ट कवर करने बोलूंगा या किसी भी इंपोर्टर को बोलता हूँ तो वो भाग जाते हैं और मेरे को भी भगा देते हैं। तो बेसिकली एटलीस्ट यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं एटलीस्ट 30 से 30 to 60 डेज का इंपोर्ट तो आपको कवर करके रखना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड है, बड़ा जो ट्रेंड है वो ऑन अ वीकर साइड है। तो आपको नेक्स्ट 2 महीने का जो पेमेंट है वो आपको हेज करना पड़ेगा। और आपको उसमें कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मेरी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you, sir, for answering that question as well. I think you would want to answer the question in the chat section. Which type of service you provide to importers regarding import obligation? My team will get back to you, or you can get back to my team, and they can, give you a short presentation, and from that presentation you can make it out कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको और आपको कैसे हेल्प करेंगे। Thank you so much, sir, for answering all the questions in detail. I hope everybody's doubts have been cleared after the session. So with this, we come to the end, and I again thank you for taking our time and sharing your insights with us. Thank you to all our viewers for joining and being an excellent audience in today's webinar. You will receive a short survey once we end the session, so please share your valuable feedback and tell us what topics you want to talk about so that we can get relevant speakers for such knowledgeable sessions. And you may follow us on social media to stay in touch with the Drip Capital. You can also follow our blogs and newsletters for recent trade updates and insights on foreign trade related matters. And also subscribe to our YouTube channel, where you can find a link to today's session and Sir's past sessions and more sessions for your reference. So please click on the link shared in the chat section right now. That's a YouTube link. And thank you all for being here today. Thank you so much, sir. It was great to have you here. Have a Thank great you. Pleasure is mine. Jai Hind. Namaskar. Jai Hind. Thank you.